बॉयल की हुई आलू में थोड़ा सा नमक और मसाला अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस डो को हाथ से साइड से प्रेस करें, सेंटर से बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिए। इससे आप एक नॉर्मल रोटी की तरह बेलेंगे तो ये फट जाएगा।
और अंदर का जो आलू और मसाला है वो सारा कुछ बाहर निकल आएगा। इसे बिल्कुल साइड से धीरे धीरे से प्रेस करें। अगर इसे पंप से प्रेस करें तो पराठा ऐसे घूमने लगेगा और पूरी आलू जो है वो पराठे में घुल मिल जाएगा। Subscribe our channel and press the bell icon.